Sir, Yes, Maha. so can you like send all the numericals that we did in this chapter? Maha, could you please repeat it? Your voice was lagging. So can you send like the questions that we did in this chapter, all of them, so I can practice? So, like specifically मुझे ऐसे याद है नोट्स में तो मेंशन नोट्स में तो पेस्टेड है ना वो न्यूमेरिकल्स I mean, हाँ है, but like questions like आधे आधे है बस. नहीं याद है मतलब समझा नहीं No, like the questions I didn't write it fully. I just wrote like half of it. That's why. जस्ट सेकंड जैसे कि ये न्यूमेरिकल्स है तो ये प्रॉपर नहीं है पीडीएफ में नहीं. अच्छा चलो कोई बात नहीं आई सेंड द पीडीएफ अगेन मे बी कुछ ग्लिच हो बट आई डोंट थिंक सो पीडीएफ में ऐसा कुछ होना चाहिए न्यूमेरिकल्स जितने हमने किए हैं सारे प्रॉपर स्टेट में हैं ऐसे ही कोई बात नहीं तो आई सेंड द इलेक्ट्रिसिटी पीडीएफ अगेन ठीक है Okay. हाँ आप फिर वहां से उसको देख लेना कोई बात नहीं चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास ओके एवरीवन so in this topic we are going to start from the factors affecting the resistance in the last class we have completed till ohm's law right अच्छा ohm's law के न्यूमेरिकल्स किए थे कि लास्ट क्लास में जो हमारे नोट्स के न्यूमेरिकल्स थे बताना एक दफा मुझे नहीं. नहीं किए थे ना चलो ये वाला क्वेश्चन करो जरा थर्ड वाला फर्स्ट सेकंड तो इजी थर्ड वाला करो and do let me know once you are done in the chat Zainab what happened to your camera please do switch it on Okay. yeah thank you Am I supposed to solve these questions? second one sorry third one only Okay. ठीक है Maha
ठीक है, so the answer would be 1.7 ampere. देखो, by default the question is already from the numbers it can be seen easily that if you halve the potential difference, the current will also get half. ठीक है, that's what the Ohm's law says. It is directly proportional. It means that the number will decrease or increase by the same factor. Okay. Now let's talk about the factors affecting the resistance. So in this topic, we are going to understand what are the factors that will affect the resistance and how do we basically analyze it. Okay. So the first thing that we have is the length of the conductor. So length of the conductor is basically, so length of the conductor is directly proportional to the resistance. Okay. It means that if you increase the length of the conductor, the resistance is also going to increase with the same factor, like double the resistance. So double the length means double the resistance, or half the length means half the resistance. Is that clear? Good. Yeah. Next is area of cross section. Area of cross section is inversely proportional to the area. Inversely proportional to the resistance. That means if you increase the area, the resistance is going to increase. That means a thick wire has less resistance as compared to thin wire. Okay. So this is the second factor. Next is nature of material. So every conductor has different resistance value. Okay. So that's why if you change the resistance, or if you change the material, obviously the resistance is going to change. Yes or no? Yeah. देखो, if we talk Yes. about, suppose देखो, लाइट चैप्टर की बात करते हैं, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वी हैव डिफरेंट मटेरियल्स फॉर डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यस और नो? वाटर एंड ग्लास का डिफरेंट है. सो Yeah. दैट मीन्स ऑब्वियसली Yes. अगर हम मटेरियल चेंज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी. सिमिलरली इफ यू चेंज द मटेरियल, ऑब्वियसली द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द मटेरियल वुड आल्सो चेंज. Last one is temperature. So temperature is directly proportional to the resistance. That means if you increase the temperature, the resistance is going to increase. Achha, one more thing. This is only for the metal, because we are only studying metals only in the 10th standard. When you will go in the 12th standard, you will teach basically you will study the basic or superconductors, okay, non-metals, and basically also in chemistry some portion is taught as well. I'm not sure, I'm not able to recall it properly, but yeah, some portion is there that is based on the resistance. That is, I think so. हाँ, electrochemistry 12th standard में आपका second chapter होगा electrochemistry, उसमें resistance आएगा. In that thing you will get to know this thing. Okay. Next is when the temperature of a conductor is increased, the resistance is going to increase. That is for only for the metal. एक सुपर कंडक्टर होता है ना, जो सुपर कंडक्टर, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बेसिकली आई थिंक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक सर्टेन रेंज के बाद. ठीक है. नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी की बात करते हैं. आप देखो रेजिस्टिविटी क्या होता है. सिंपल वर्ड्स देखो. सपोज इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं बैकग्राउंड को रिमूव करता हूँ. सपोज करो ये पेन है, आप ये सपोज करो ये वायर है आपकी. ठीक है. रेजिस्टिविटी में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस को एक ही समझते हैं, बट द डिफरेंस इज, देखो जस्ट सेकेंड के बाद है सेंटर्ड. ठीक है. सो दिस इज योर वायर. सपोज करो ये 1 मीटर की लेंथ है इसकी, एंड द 1 मीटर इज द क्रॉस सेक्शन, मींस दैट सर्कुलर पोर्शन. ये जो होता है ना सर्कुलर पोर्शन, दैट इज आल्सो 1 मीटर स्क्वायर. ठीक है. सो बोथ आर यूनिट dimensions. Like 1 meter is unit, 1 meter square is also unit. Yes or no? Yes. ठीक है. अब देखो इसमें क्या है कि if the length of the wire is 1 meter and the area of cross section is 1 meter square, जो भी वो वायर उस dimension में resistance provide करेगी, that will be called as resistivity of the conductor. That is the default value. हम कहते हैं ना default settings होती हैं कुछ mobiles की या कुछ किसी भी appliance की, something कुछ भी बात कर ले, एक default setting होती है, default state होती है. Right, there is a default state. So similarly, every material has a default resistance for a unit value of dimension. That is called your resistivity. It is not going to change. Suppose करो अगर मैं कहता हूँ कि like I have I'm selling, like I'm basically purchasing banana that is 4 rupees. Per banana is 4 rupees या per apple is 4 rupees. So अगर मैं यहाँ पे 40 banana या 40 apples भी खरीदता हूँ, is it going to alter or is it going to change? Maha, Zainab, No. Ibad, is it going to change? No. No. No ना. That means मैं कुछ भी इसमें number of, मैं कितना भी increment कर लूँ कितना decrement कर लूँ, it's up to me. But the unit value of a single piece is not going to change at all.
Clear? So similarly, the unit value of the material is not going to change. That is your resistivity. Okay? So it does not depend on the length or the thickness of the wire. That's why suppose करो अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने 4 रुपीज का मुझे 4 रुपीज में एक एप्पल परचेज करने को मिला. ठीक है. सो अगर मैं यहाँ पे 200 एप्पल लेता हूँ, क्या इसमें कुछ चेंज होगा? नंबर से मैट नंबर इफेक्ट ही नहीं कर रहा है इसको. वो क्या Yeah. आएगा? सीधे सीधा आपके 800 रुपीज हो गए, मल्टीप्लाई कर देगा. सो दैट्स वाई resistivity is the fundamental thing of a conductor of a material. ठीक है? That means irrespective of the dimension, it's going to offer the same value of the resistance at this point, जो कि होती है unit length and area. ठीक है? So if we Yeah. talk about, if you see this thing, if you see the definition as well, the resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of a rod that substance which is 1 meter long and 1 meter square in cross section area. ठीक है? That's why इसका resistivity का दूसरा नाम होता है specific resistance. When you will go in 12th standard chemistry, electrochemistry जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे specific resistance. That is nothing but your resistivity. Specific resistance. Specific है ना, क्योंकि हम लोग एक fixed dimension की बात कर रहे हैं, that is unit dimension. So obviously it's going to be specific, so that's why it is also called as specific dimension or specific resistance or resistivity. Clear all of you? Ibad, are you Yeah. there? Yes. चलो ठीक है. Please do switch on the video Ibad. Yes. ठीक है. Clear हुआ everyone? So that is the difference. Yes. Resistance means the substance can be of any dimension. ठीक है? सब्सटेंस जब किसी भी एक डायमेंशन में होगा तो आपको फिर उस डायमेंशन के मल्टीप्लाई करना होगा रेजिस्टिविटी से टू गेट द रेजिस्टेंस. देखो हम यहाँ मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं डायमेंशंस को. अगर यहाँ पे यूनिट वैल्यू रख दे तो रेजिस्टिविटी के बराबर आ रहा है. दैट मीन्स द डिफॉल्ट वैल्यू. ठीक है? But यहाँ पे हमें dimensions, if the dimensions are different, so resistance is gonna change obviously. So that's why we multiply the values with it to get the actual resistance. Yes or no, everyone? Yeah. Any Yes. doubt so far to anyone? No. Sure, clear हुआ ये? Yeah. बोलो clear हुआ? Yes. Yeah. ठीक है. Yes. Just a second, let me share my screen. ठीक है. Good. Okay, so the SI, okay, how do we basically get the formula of resistivity? Just nothing but just combine the length and the basically factors of the resistance, that is L is directly proportional, R is directly proportional to L, inversely proportional to A. To remove this proportionality sign, I'm going to introduce a constant that is called resistivity of the conductor. Okay, and that's how we get the value, and the SI unit of resistivity is ohm meter. Clear, everyone? Yeah. Yes. Good. Next is SI unit of resistivity is ohm meter. The resistivity of the conductor does not depend on length or thickness. Only thing that matters is basically the temperature. Okay. Second thing is the nature of material. Obviously, if you change the material, obviously different resistivity will replace with that value. Yes or no? Okay. So that's why resistivity would be Yes. different. Clear all of you? Yes. Yeah. Any doubt so far to anyone? Please do let me know. No. Good. Okay, so the resistivity of a copper is 1.69 into 10 to the power minus 8 ohm meter. That means if we take a rod of 1 meter long and 1 meter square in cross section, then the resistance would be 1.69 into 10 to the power minus 8 ohms. Clear all of you? So that is is that clear? Resistivity means resistance in basically of the copper rod would be of unit dimension this. Clear? So the Yeah. resistivity of alloys are much more higher than those of pure metal. Alloy is nothing but the combination of metals. Okay. So steel is an alloy. Okay. Nichrome is an alloy. Okay. So these are such alloys that we use as the heating elements in the electrical heating appliances like toaster or oven, hair dryer, heater. So these are such metals that we use because the resistivities of such materials are very high, like tungsten that we use in the filament bulb.
ठीक है. Right now filament bulb are almost extinct. Basically it's not available in the market. एलईडी बल्ब लाइक कभी बाय चांस मिल जाता है, अदरवाइज अब नहीं मिलता एलईडी बल्ब. सॉरी एलईडी नहीं, फिलामेंट बल्ब. एलईडी बल्ब कंप्लीटली रिप्लेस कर दिए. ठीक है. सो नाइक्रोम alloy is used for making the heating elements of the electrical appliances. ठीक है. Because nichrome has a very high resistivity, nichrome does not burn or melt easily even at high temperature. ठीक है. मेल्ट इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, कभी बाद में कंफ्यूजन हो. ठीक है. ठीक है. सो दिस इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो. Yeah. Yes. चलो जल्दी से. ठीक है. ये क्वेश्चन तो इजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना. सिंपल वन सारी वैल्यूज कैंसिल होकर आपको रेजिस्टिविटी मिल जाएगी कॉपर की. ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है. इस क्वेश्चन को जरा बताओ मुझे क्या होगा. लेट मी नो द आंसर इन द चैट, बोथ ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, आई मीन इबाद एज वेल. ठीक है. बात, व्हाई डिड यू जॉइन लेट? I was doing हाँ, I was doing something. योर वॉइस इज वेरी लो इबाद. So I was doing something. अच्छा, यू वर डूइंग समथिंग. चलो कोई बात नहीं. इज योर बडी? ही इज मिसिंग. हाँ. चलो कोई नहीं. It seems like वो मैथ्स की ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है अभी. अयान, I heard that your paper was very tough of maths. Pre-boards. Was it? No, pre-board is gonna start on Tuesday. Pre-board is gonna start No, on अभी Tuesday. recently कुछ हुआ था ना पेपर आपका. Ayan has shared a paper with me. Yeah, at the model exam. Model exam. हाँ. Like क्वेश्चंस अच्छे थे उसमें. एमसीक्यू काफी अच्छे थे. प्रैक्टिस ऐसे ही क्वेश्चंस, मतलब मॉडल टेस्ट पेपर को दोबारा सॉल्व करना. ठीक है. अच्छे पेपर है वो. So did you get the marks बाद then of the models or not? No, sir. अच्छा.
Any answer? Okay, Zainab, give me the answer. ठीक है Zainab, good. What about Mahar? बात जल्दी से करो इसको, फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट क्लास हम लोग न्यूमेरिकल्स की करेंगे. दैट वुड बी आई थिंक लाइक रिसेंटली हुई, कल या परसों में, फॉर द न्यूमेरिकल्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा है. सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 2 क्लास कंप्लीटली फॉर द थ्योरी. ठीक है, ताकि अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन कर सको. बाकी रे डायग्राम वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही किसी को अब, या फिर कुछ है ऐसा चीज जो नहीं क्लियर है? हाईलाइट चैप्टर ही ह्यूमन आई में क्लियर है? ह्यूमन आई लाइट चैप्टर सबको? या Yes. चलो ठीक है. ह्यूमन आई के मार्क्स मिले? नहीं अभी नहीं मिले. चलो ठीक है. ठीक है हाँ ठीक है, बात ठीक है. देखो now the question, देखो value would be 122 by 7.7, very good, and the resistance would become 1 by 4 times of the actual resistance because the area is doubled. ठीक है, if the diameter is doubled, ultimately the area is going to double. ठीक है, so that's why it will basically decrease by half. Next, अच्छा इसको जरा कैलकुलेट करके बताओ मुझे, थर्ड वाले को. सर the diagrams of electricity chapter important. डायग्राम्स वो इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह वाले देख लेना, लाइक सेल का क्या डायग्राम होता है, एंड आपका इसका क्या बोलते हैं, सेल हो गया. एम एम मीटर के लिए क्या यूज होता है? एम मीटर के लिए आपकी स्ट्रेट वायर यूज होके ए लिखा होता है. वोल्ट मीटर के लिए वी लिखा होता है. बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है. स्विच के लिए यूज होता है हमारा. ठीक है, सो ये सब चीजें देख लेना बस. और क्लोज सर्किट के लिए ये पॉइंट यूज होता है, ओपन सर्किट के लिए ये पॉइंट यूज होता है. सो ये सब चीज देख लेना. एनसीईआरटी में जो टेबल है ना, दैट इज इनफ. एनसीईआरटी का टेबल एक दफा रेफर कर लेना. आई डेंट बेसिकली टेक इन द क्लास बिकॉज इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. बहुत बाई चांस द क्वेश्चंस कम, बहुत बाई चांस. तो इसलिए बस एक दफा अच्छे से उसको देख लेना, चेकआउट कर लेना कि लाइक व्हाट Yeah, आर द because सिंबल्स. my class teacher told to like write that in the notebook because it might come. That's हाँ why. इट माइट कम, बहुत रेयर चांस पे आता है वो, और आ भी सकता है तो उसमें आएगा वो आपका 1 मार्कर में. ठीक है, सो इसलिए मैच द फॉलोइंग्स करके आ सकता है वो. ठीक है, सो उस चीज को थोड़ा सा आप देख लेना. अदरवाइज जो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ पे से क्वेश्चंस अच्छा आ सकते हैं, दैट इज योर कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स. वहां पे हर बच्चा ट्रिक होगा. अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है तो, आइडेंटिफाई करना नहीं आया तो, कि लाइक व्हाट इज मतलब सीरीज में है या पैरेलल में. अदरवाइज द चैप्टर इज देन इजी, नॉट मोर देन. We should do this next one also. हाँ 6th वन, जो जिसमें आपको 6 ओम्स का रेजिस्टेंस है, वो भी कैलकुलेट करो. इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स, लाइट चैप्टर के रे डायग्राम्स, ह्यूमन आई के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, एंड मैग्नेटिक्स के फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस. ये तो डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं पेपर में. ये 4 चीजें मतलब कर लो. और ह्यूमन आई का हाँ वो मायोपियन हाइपरमेट्रोपिक रे डायग्राम 5 मार्कर्स में अगर आया क्वेश्चन ह्यूमन आई से 5 मार्कर, डेफिनेटली वो आने वाला है. 3 marker for the questions like draw the ray diagram or write down the basically how to correct it. Next one होगा उसमें या तो conceptual question देंगे, why the sky is blue, why the sky is dark for the astronauts, or why there is a delay in the sunset or early in basically advanced sunrise का वो question. So इस टाइप से आ सकता है क्वेश्चन 5 marks में. ठीक है,
and if you have solved some sample papers, you will observe that pattern. आप sample paper देखना, यही pattern होगा आपका. ठीक है जैनब जी के बाद महा आंसर. अच्छा महा, एक वन मोर थिंग, थोड़ा सा ओवर एक्सप्लेन कम किया करो आंसर्स में. अगर आप 2 मार्कर्स में 2 पेज का सॉल्यूशन लिखोगे ना, आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो उसमें. लाइक मैथ्स में Okay. आई हैव सीन दिस थिंग. सो ट्राई टू बी अ लिटिल बिट मोर कंसाइज. देखो 5 मार्कर्स में चलता है इतना एक्सप्लेनेशन, बट 2 मार्कर्स में 2 पेज का एक्सप्लेनेशन, अगर आप शुरू में इतने 2 मार्कर मान लो 5 क्वेश्चन है, 5 या 6 होते हैं, तो 12 नंबर में अगर आपने 1 घंटा लगा दिया तो सिर्फ 2 घंटे बचे आपको बाकी पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए. तो Okay. थोड़ा सा 2 मार्कर्स में अगर स्टेप आप 3 या 4 स्टेप में भी कंप्लीट करें तो दैट इज इनफ. 2 मार्कर्स में इतना इशू नहीं होता. 3 मार्कर्स 4 एंड 5 में आपको एक्सप्लेन करना होता है. इवन दो आप देखोगे कि 5 मार्कर्स में भी अगर आपने 1 पेज लिखा दैट इज इनफ. आपके करेक्ट स्टेप्स करेक्ट होने चाहिए. Okay. ठीक है. आई नो दैट आप थोड़ा सा स्पेशियस लिखते हो, थोड़ा सा लाइंस काफी 3 लाइन छोड़ते हो, बट ट्राई टू बी लिटिल बिट मोर कंसाइज. ठीक है, बिकॉज दैट विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मार्क्स इफ यू डू दैट थिंग इन द बोर्ड्स. ठीक है, एक तो प्रेशर होगा, दूसरी बात आपको, एक तो प्रेशर रहेगा, दूसरी बात आपका हाथ जल्दी जल्दी चलना है उस टाइम पे. कुछ अगर छोटी मोटी भी मिस्टेक हुई तो वो फिर कैरी करती है आगे क्वेश्चंस में. ठीक है, या दैट्स राइट. ठीक है, सो बस ये चीज मैंने आपके उस पे फीडबैक पे भी लिखी है, यही चीज थी. दैट ट्राई टू बी लिटिल बिट मोर कंसाइज विद द 2 मार्कर्स. 1 मार्कर और 2 मार्कर में जितना जल्दी आप खत्म कर सको उतना करना है. ठीक है, इज कोई सा भी सब्जेक्ट हो, इट्स नॉट लाइक मैथ्स, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, 1 और 2 मार्कर्स को तो लाइक फर्स्ट हाफ एन आवर में ही कंप्लीट कर देना है. ऐसे आपको Okay. प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, बाकी 2.5 आवर्स 3 4 5 पेपर 2.5 घंटे में नहीं सॉल्व हुआ तो आई एम हियर. मुझसे कहना सर 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं होता. हो जाएगा. ठीक है, चलो. हाँ, आंसर इज राइट, दैट इज 1.5. ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन, बिकॉज इसमें इतना कुछ खास नहीं है. ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग, डेरिवेशन जरूर देख लेना. Derivation will be there in your exams for 3 markers from this chapter. Single derivation है ये. That is either series और आपकी पैरेलल. और वो डिपेंड कर सकता है, क्वेश्चन में कह सकता है 2 कंडक्टर्स रेजिस्टर्स के लिए ले लो या 3 रेजिस्टर्स के लिए ले लो. समटाइम्स n रेजिस्टर्स भी कह सकता है. हमने जनरल केस ले लिया, हमने n रेजिस्टर्स ले लिया, बट जो क्वेश्चन जितने कहेगा आप उतने तक रिड्यूस कर देना इसको. ठीक है, तो इट्स, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द कंप्लीट जनरल केस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग. ठीक है. Okay, next thing is, okay, we have two combination of the resistors in this chapter, that is series combination and parallel combination. Okay, in series combination, when 2 or more resistors are connected in consecutive manner, sequential manner, such thing is called as series combination. Okay, everyone. Next is, in the series combination, the current is same through the whole circuit. अगर हर एक resistor में current same होगा. ठीक है, and equivalent resistance is obtained by adding the resistors. अगर आप equivalent resistance चाहिए आपको, just add them up. ठीक है. Next is, when the number of resistors are connected in series, then their combined resistance is more than the individual resistance. You know this thing. Suppose अगर ये 5 है और ये 4 है, ऐड करो 9 हो रहा है, तो ये 9 जो है दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा है भाई, 4 से भी तो ज्यादा है ना. So in the series combination, you will observe that the final resistance, the net resistance of the combination is more than the individual resistance. ठीक है. Next is, and one more thing, potential is different in each resistor. Potential is different. ठीक है. So how do we find out? देखो, for the series combination derivation, we are assuming that suppose R and resistance are connected in series, and the potential difference across each resistance is V1, V2, V3 up to N. Okay, so the total potential would be V1 plus V2 plus Vn, because the potential is divided in each resistance
depending on the value of the resistor. Okay. Next is the total potential. If we apply the Ohm's law in the whole circuit, that would be total potential, total current, and total resistance. Yes or no? ठीक है. Yeah. Yes. So अब यहाँ पे हमने टोटल, ये तो टोटल सर्किट के लिए लगा लिया. अब हमें क्या करना है, हर एक रेजिस्टर में इंडिविजुअल ओम्स लॉ अप्लाई करना है. ठीक है. So V1 is equals to IR1, V2 is equals to IR2, V3 is equals to IR3, and so on. VIRN के लिए just add them up. So if you add them up on the left hand side, you will get V1 plus V2 up to Vn. On the right hand side, you are going to take IR1, IR2, IR3 up to IRN. ठीक है. So you know this thing that V1 plus V2 up to Vn is nothing but your total potential, and I will be taken as common. If you will see this thing, Rn, R1 plus R2 plus up to Rn is nothing but your the total resistance, right everyone? Okay. Yeah. So I'm going to substitute V as I into R, so that I will cancel. Okay. R is only left, so that's how you obtain the general resistance, general expression for the resistance. Is that clear? Yeah. Yes. Any doubt so far to anyone? Do let me know. No. Good. नाउ ठीक है. सो सीरीज कॉम्बिनेशन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसको तो स्किप कर देते हैं. देखो 6 + 4 करोगे तो 10 आ जाएगा. 20/10 would be 2 ampere. So in the each resistance 2 ampere will flow through it. And how do we calculate the potential across each resistor? Just multiply the current with the resistance. You will get the potential in each resistor. ठीक है. देखो V1 2 into 6, बाकी रिमेनिंग कितना है, 20 वोल्ट है, बाकी 8 वोल्ट will be going the 4 ohm resistor. Clear all of you? Yes. Yeah. Okay. Next is parallel combination. So parallel combination says that when two or more resistors are connected at the same point, between the same point, okay, so such combination is called as parallel combination. So potential difference in parallel combination would be same in each resistance because they are connected at the same point, between the same point. Dekho, each resistor is connected over here, that is A and B. Yes or no? Okay. Yeah. So there is, and the resistor would be reciprocal, the net resistance would be reciprocal of the combined resistance of the number of resistance. ठीक है. Next is parallel combination में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होता है नेट रेजिस्टेंस. लाइक अगर आपका इंडिविजुअल कह रहा है 4, 5, 6, तो जो भी इसका वैल्यू आएगा, सपोज कर लो वो 3 आया. सो देखो, सबसे इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा उस सबसे छोटे वाले से हमेशा कम होगा. 4 है सबसे छोटा यहाँ पे, सो 4 से कम ही होगा ये जो नेट वैल्यू आएगी आपकी. ठीक है. ऑलवेज इससे एक दिस इज अ मेथड टू वेरीफाई वेदर यू गेट द राइट आंसर और नॉट. सो उससे आप मेंशन देख सकते हो कि हाँ भाई मेरा आंसर करेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, और ये हमेशा हो. ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर द efficiency basically. ठीक है. Next is how to derive it. So I'm going to assume the same R1 plus R2 up to Rn, they are connected in series, parallel combination. ठीक है. And we know this thing that the current through the each resistance would be I1, I2, I3, because यहाँ पे current के पास multiple branches होती हैं divide होने के लिए. ठीक है. सीरीज में सिर्फ एक ही फ्लो होता है तो एक ही सेम करंट होता है, बट यहाँ पे हर एक करंट के पास अपनी इंडिपेंडेंस है कि मैं इसके साथ जा रहा हूँ, मैं इसके साथ जा रहा हूँ, मैं इसके साथ जा रहा हूँ. क्लियर है? Yeah. ठीक है. Yes. So if you add all the current I1 plus I2 up to IN, that is nothing but your total current. Yes or no? Yeah. Yeah. ठीक है. अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ ओम्स लॉ पूरे होल सर्किट में. दैट विल गिव यू टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल बाय नेट रेजिस्टेंस. यस और नो? Yeah. Yes. नाउ आई एम गोइंग टू, देखो हर एक बोथ डेरिवेशंस आपको पहले टोटल सर्किट में लगाना है, फिर उसके बाद आपको इंडिविजुअल सर्किट में लगाना है ओम्स लॉ. ठीक है. सो बोथ सेम, यही दोनों में सेम है, बट उसमें आप पोटेंशियल लोगे ऐडिंग करने के लिए, यहाँ पे आप करंट लोगे ऐड करने के लिए. ठीक है. क्योंकि करंट डिफरेंट है, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंट था. ठीक है. So I1 would be equals to V by R1, I2 would be equals to V by R2, I3 would be, and so on would be V by Rn. ठीक है. So if you add them up, ऐड कर दो, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेगा I1 plus I2 up to IN, राइट हैंड साइड पे आपको यही कॉम्बिनेशन मिलेगा. ठीक है. यहाँ से आप V कॉमन ले सकते हैं. ठीक है. So you will get I1 plus up to IN is nothing but your total current, that is I, and V is taken common, so this is your expression left in the bracket. ठीक है. So I can write I as V by R according to Ohm's law, that is basically applied in the whole circuit. ठीक है. So that would be V by, so V by R is cancelled, so what is left? 1 by R is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 up to 1 by Rn. So that's how you calculate it. ठीक है. So
ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन करो आप जरा, लेट मी नो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Let me know the answer in the single message. Okay. The answer by Maha Zainab. ठीक है, एक बार जल्दी से आंसर दो। What's your answer? ठीक है, got the answer by the बाद as well. ठीक है, let's check how much. ठीक है, the first option would be 4.8, अच्छा नहीं 4.12 ohm is the total resistance of the circuit. ठीक है, is that clear all of you? देखो किसका आंसर, किस किसका आंसर मैच हो रहा है 12 ohm?
ठीक है, all of you are getting the right answer. ठीक है. ठीक है. The total potential would be 0.5 and the potential across the first resistance would be 3.6 volt. ठीक है, ये आंसर आ रहा है सबका? Yes. Maha, you are not getting the right answer. Check. Yeah, I did. I just wrong. अच्छा, ठीक है, टाइपो मिस्टेक्स है. इज इट टाइपो? Yeah. चलो कोई बात नहीं. इसको जरा आंसर सॉल्व करो. सच काइंड ऑफ, देखो सिंपल क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में कि तीन रजिस्टर दे दिए, तीनों पैरेलल में दे दिए या तीनों सीरीज में दे दिए. इतना सिंपल नहीं आने वाला. कॉम्बिनेशन आएगा. So be ready for it. There would be combination for both series and parallel. So in a single circuit, both will be mentioned. ठीक है. In the next class, I'll take some more questions. Okay, based on the electricity chapter, so that we can have much more variety of questions in the arsenal. मैथ्स में कितना रिवीजन हो गया? Like half. लाइक कितने चैप्टर से रिवाइज कर ली मैथ्स में?
फर्स्ट आंसर बाय जैनब, ठीक है, वेरी गुड। द आंसर बाय माहा इबाद। नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक पावर, ये सब बाकी विद न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में कंबाइन करेंगे, ठीक है। ठीक है, बात क्या हुआ, व्हाई डिड शी लेफ्ट, गुड। नाउ ठीक है, लेट्स वेरीफाई 6 ओम इज दी, नहीं 6 ओम नहीं, आई थिंक 11 ओम इज द टोटल रेजिस्टेंस, यही आंसर है। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। एंड द potential across the AB is 5 volt and potential across VBC is 6 volt. And after that potential, oh, the current across the second resistance is 0.6 and 0.4. Very good, ठीक है, that's good. अच्छा, ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करो। इज इट विजिबल, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू दिस क्वेश्चन? देखो मुझे लग रहा है सेम ही क्वेश्चन है, छोड़ो छोड़ो, ये सेम ही क्वेश्चन है, ओनली द वैल्यूज आर चेंज्ड, ये सेम ही क्वेश्चन है। Maha, are you there? Yeah. क्या हुआ, what happened suddenly, network Yeah, issue? I just went back to like the main page of Zoom. अच्छा चलो कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू होगा, कोई बात नहीं। So so did you send the answer to me? Please send it to me. Okay. 5 to 11, 3/2 किसके लिए मिल रहा है आपको एम्पेयर? 3/2 तो नहीं होना चाहिए, महा कौन से उसके लिए 3/2, ये 3/2 एम्पेयर अक्रॉस ए बी, ये 3/2 एम्पेयर आपका ये किस पार्ट के लिए महा? This Like the one. B and C. What is the current across the other two resistors? 3/2 तो नहीं होगा महा, 0.6 and 0.4 एम्पेयर करंट है। 3/5 होना चाहिए if you are talking about in fractions. Please check your calculations, ठीक है। Okay Maha, please check it.
Okay, everyone. So, Maha, are you there? Yeah. So I was asking कि please check your calculations. I think आपने कोई mistake की है calculation में. ठीक है. चलो, so फिर let's end this class. Okay. So in the next class we'll continue with the same